Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Welcome to an Amazon haul again. Now in this video, I have shopped some co-ord sets from Amazon. When I talk about myself, I specifically love to wear shorts in winters. घर पे भी मैं shorts में ही रहती हूँ. So in today's video, I'm going to be sharing with you all some co-ord sets that I got from Amazon. So if you are interested, then please keep on watching. But if you are new here and you haven't subscribed to my channel yet, then hi, my name is Rashi and I would love for you to subscribe to my channel. Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video. And now let's get started with today's video. ओके सो मैंने ना 3 कोअर्ड सेट मंगाए हैं लाइक द टी शर्ट एंड शॉर्ट्स थिंग वो वाले कोअर्ड सेट मंगाए हैं एंड एवरीथिंग इज अंडर ₹480 बेसिकली आप ₹500 मान के चलो ऑल द 3 कोअर्ड सेट्स दैट आई गॉट आर अंडर ₹500 आई विल शो यू वन बाय वन फर्स्ट कोअर्ड सेट लुक्स लाइक दिस इज वॉट द टी शर्ट लुक्स लाइक इट सेज शिकागो एंड मैंने इसमें एक रील डाली थी घर पे नए घर पे शिफ्ट होके कुकिंग वाली रील डाली थी एंड मेनी ऑफ यू वर आस्किंग द कोड सेट लिंक सो आई गॉट इट फ्रॉम Amazon फॉर ₹480 एंड दिस इज वॉट द टी शर्ट लुक्स लाइक मुझे तो टी शर्ट भी ऑन इट्स ओन काफी कूल लगी एंड इट लुक्स लाइक आई गॉट इट फ्रॉम H&M पे बहुत सारी ऐसी टी शर्ट्स मिलती हैं जिसपे ऐसे सिटीज के नेम लिखे रहते हैं सो आई गॉट दिस वन एंड आई गॉट इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल बॉटल ग्रीन कलर आई रियली लव दिस कलर ऑन मी एंड उसके साथ में वी गेट दीज शॉर्ट्स कॉटन शॉर्ट्स एंड इसमें भी थोड़ी सी ऐसे डिटेलिंग दी हुई है टू मैच द टी शर्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हैज पॉकेट्स बिकॉज आई एम अ पर्सन हु नीड्स पॉकेट्स इन देयर bottom because I need to keep my phone or whatever so it has pockets and they are really comfortable मैंने इसको medium में मंगाया है because I thought कि this is a co-ord set and I want to be comfortable so I don't want कि ऐसे मंगाऊँ तो एकदम ऐसा fitted रहे या कुछ तो I got it in a size larger which is medium and it fits me perfectly like oversized perfectly. I really love it and you can get this बहुत ही सही है and you can wear it as a night suit if you are fancy like that and if you are not then you can wear it as your casual wear या फिर आप बाहर कहीं जा सकते हो इसको पहन के आराम से these are so good to lounge in. Next I got is similar but color different है and pattern different है so this is what the next coat set looks like. It says good vibes. This one is in a very light pista color. I can say it is a pastel green almost. यहाँ पे लिखा हुआ है good vibes with a darker shade of green and you get the pants with it and इसके pants में भी यहाँ पे डिटेलिंग है to match the t-shirt. Again you get the pockets. I feel like इसके shorts जो है ना वो थोड़े से short ज़्यादा हैं as compared to the green one. But और भी आपको इसमें ना patterns मिल जाएंगे जैसे आपने देखा कि दोनों same ही थे almost. The pattern was different and the color was different but the material and everything was similar. So you can find n number of patterns in this and this is also for ₹480 or something and I got it in medium as well. मुझे इनकी t-shirts भी बहुत cool लगी. Last quad की जो t-shirt आई है वो मैंने अलग से भी पहनी है अपने ऑफिस में on a Friday. I wore it with jeans and it looked really cool. So इनकी टी शर्ट्स भी अलग से पहन सकते हो एंड मुझ पे तो हमेशा शॉर्ट्स की कमी रहती है घर पे कि मेरे को मिलते ही नहीं है मेरे पजामे सो this is what I'm gonna wear now. Next coat set that I got is in a very pretty blue and white combination. This is what it looks like. Now this is a tie-dye kind of a pattern and looks really aesthetic and pretty. ये इसका जो cloth है that is not cotton. ये थोड़ा blended वाला fabric लग रहा है so it is really like slippery. This is not cotton so just letting you know that and इसके साथ में भी similar shorts आते हैं. इस पे कुछ भी ना pattern या graphics नहीं बने हुए हैं. ये सिर्फ plain pattern like tie dye print है. So comes with the shorts and इसके जो shorts हैं ना वो काफी लंबे हैं. Like नी से ऊपर है obviously लेकिन काफी मतलब आपको लंबे लगेंगे like see. So I didn't like that because मुझे एकदम ऐसे लंबे लंबे शॉर्ट्स नहीं अच्छे लगते या तो पूरा मैक्सी ड्रेस हो या तो शॉर्ट हो बीच में कुछ नहीं. So this is what it looks like and you have 2 pockets on each of the sides which again is a plus point. This is what your coat set number 3 looks like and I also got it for ₹460 or something and I got it in medium. I have said this before, I'll say it again. कुछ भी इनसे ज़्यादा comfortable नहीं होता है for summer. Those were the 3 coat sets that I got. Next I got is this maxi dress. Now I love maxi dresses. जो knees के नीचे तक होती हैं जिसमें पैर दिख रहे होते हैं इतने I love those and I love those strappy noodle strap वाले dresses. So I got this one. I wore this to a movie and I posted pictures. Many of you were asking कहाँ से है ये dress. So I got it from Amazon. Obviously half of my clothes are from Amazon only. So I got it for ₹800 and I got it in small because I thought कि medium मंगाऊंगी तो it would like look a little loose. वैसे भी it's a midi dress तो medium मंगाऊंगी तो एकदम ऐसे floor touch ना कर दे इतनी लंबी ना हो. So I got it in small and I really love it. The fitting and everything is good. मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो elastic लगी हुई है ना उससे I look kind of bulky but I don't mind that because I love this dress so much and it
It comes in a lot of patterns and colors, so I chose this one because I like red on me. But you can go for very many patterns and prints, and you should go for such dresses if you like them because ये बहुत अच्छी लगती हैं and they are so breathable. I just love it. At last I got this dress which I'm wearing right now. इसमें मेरे साथ थोड़ा सा blunder हुआ है. I got it in small and it fits me like परफेक्टली. अगर मैं इतनी सी भी 19-20 ज़्यादा होती तो मुझे बनती नहीं, दैट आई एम श्योर. सो एंड मैंने स्मॉल पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी में मंगाई. अब तो ये रिटर्न भी नहीं हो सकती. नन ऑफ द क्लोथ्स दैट आई ऑर्डर्ड इज इन देयर रिटर्न पीरियड. बहुत टाइम पहले मंगाए थे मैंने, और मैंने इसको आज ही ट्राई करा है. मैंने इसको 15-20 दिन पहले मंगा के रखा था. द थिंग विद दिस इज कि जो इसका आगे वाला पार्ट है, इट्स अ टाइम पार्ट है, नीचे का पूरा खुला हुआ है. सो इट इज़ वेरी वेरी रिवीलिंग फॉर मी एंड आई नीड टू फिगर आउट सम वे टू like cover it up because I would not wear it otherwise, and I really want to wear it because look at the sleeves and everything. This dress is so dreamy and the price is so good. I got this for rupees 864 and I got it because of its price only, one, and second because it was so cute, but it's very like kind of revealing for me, so I would not wear it on its own, but I would find an alternative because I really love this dress and I wouldn't let this dress go in vain. So I'll definitely try and figure out कि मैं क्या कर सकती हूँ. If you have any idea कि मैं कैसे I can cover it up a little, so you can let me know in the comments. I would love to take some help from you guys. So that is all that I have for you in today's video. It was a very short video. I chose very specific clothes that I like and I would wear, so वही मैं आपको दिखाती हूँ. And yeah, that is it. If you enjoyed watching this, then give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. Follow me on my Instagram. This is my Instagram handle. You can get all of these clothes from Amazon and I have linked everything in the description box below, also in the pinned comment, तो आप देख लेना. And yeah, with that I'll be taking your leave. You will be seeing a lot of content, summer content on my channel आगे आने वाले time में. So stay tuned for that. I will see you super soon in my next video. Till then, bye bye toodles.